Good afternoon. Should I start? Still people are entering. Afternoon, sir. Is it audible? And Yes, sir. It's clear as yes, well. sir. Okay. So within 2 minutes at 2:05, I'll start. Okay. And tomorrow Right, sir. I'll be having another class 2 to 3. So then it will be in a better position. All right. Sure, sir. So let me. So is it visible? Am I? Is it visible to you, all of you? It was visible Oh, earlier, but then okay, it's okay, okay, okay. Okay. So let me start. Actually, this is a very poor style. You first writes, please don't waste 5 minute time. You should be 5 minutes early. so we can start. Uh, should make habit to be on the time. So let's start with uh, quickly brief and then the first lecture, historical review, and then on the first unit part, the single particle dynamics or mechanics. Okay, so let me first give you, because last time it was a not very clear view. So quickly in a minute, let me share with you the structure, though I have sent it to you on all your email IDs. Okay. Uh, so after this, I'll not allow them, please. Should be a little sincere, भाई. अब ऐसे ही आते जाओगे तो बाहर रहोगे आप. So, uh, is it clearly visible? So this is the course structure. There will be three component. It will be a 3 credit theory course, and also there is a tutorial. And in tutorial there are 3 sections: S5, S6, and S7. So all these 3 sections will be handled by 3 tutorial assistant students. All right, and they will be separately handled through their interaction. And after that, if there is still problem, they will be dealt in a lecture, combined lecture to all 3 sections for a tutorial problem. So the weightage is for 3 component. One is CWS, which you call as classwork sestal. There is no PRS. Midterm 25, and the end term is 50. So it is end term, midterm, and then you have CWS. CWS and midterm is equivalent, and end term is 50. All right. So after this, if you look at, there are 5 units, all 42 lecture, almost equivalent, and you will start with the single particle mechanics with some
introductory part, which I'll cover in little bit faster mode. I'll directly come on to the concept of potential. Actually, this is very important for classical mechanics part, how potential is analyzed and how it entered in mathematical form, and then conservation of linear and angular momentum. Okay, a variable mass problem, we already have two three-value Dispal problem at 10 plus 2, you might have gone through. The central force. So central force problem is motion under gravity, a heavy gravity motion, which can basically give you parabolic path, and also scattering theory. And then I will go on to the center of mass and laboratory frame and velocity. Though you know it, but we will try to explain it in different frame of reference with a better. So the real picture starts from lecture unit third. There you study the rigid body dynamics and basically rotation of bodies, a rotation in 3 dimension, 2 dimensions, then the moment of and parallel perpendicular axis theorem, equation of rotational motion, and then how the principle of conservation of angular momentum, then and any queries? Is it audible, clear? So I'm sorry to interrupt, but your voice is breaking constantly, so we cannot make out what you're trying to say. Same. I'm connecting. I'm connecting with the across the Europe. Daily there is interactions. US everywhere. There's no such problem. I'm sorry, sir, but I'm not the Your only one voice. who's fe- Yes, I'm sir. sorry, There is I'm some sorry, sir, cracking to your but voice. I'm not the only one who's facing this problem, sir. There are others as well. For almost everyone because अभी right, आपकी आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है आवाज? yes, sir. सर अभी अभी आ रही है, बट फिर बीच में अचानक से हेलो एक सचिन. ब्रेक हो जाती है सर. ज्वाइन कर लो. बीच में होगा, लेकिन ये है उसके बाद जो दिक्कतें होंगी, बहुत ज्यादा अगर कट है तो भाई फिर हम बंद कर देते हैं. देन यू विल कम एंड आपके 2-2 घंटे की फिर मैं क्लास लूंगा. लेकिन पिछले सेमेस्टर पूरे ही लिया गया है क्लास. एंड दिस इज ए लैपटॉप एंड मोबाइल सिस्टम है, बहुत ही हैवी ग्रेड का है. सर इट्स अभी हाईएस्ट आई थिंक पॉसिबल थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन एज स्टेबल ऑफ है, तो नाउ. फिर अभी आई थिंक अभी आप कंटिन्यू कर लो जल्दी से. देखो बेटा, ऐसा है, ये तो छोटे छोटे फ्लक्चुएशन है, आप उस पर ध्यान दीजिए. कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो मैकेनिक्स आप जो है हाई स्कूल से ही पढ़, यही सबसे टफ सब्जेक्ट है. इफ यू एंड इंटरेस्टिंग आल्सो. सो अब आपके जो 1 और 2 है, ये प्रॉब्लम ज्यादा टफ नहीं है, ये पढ़ते आए हो आप. लेकिन जो रोटेशनल डायनेमिक्स से आपने पढ़ा है, बट उसकी फिजिक्स बहुत डीप है, और उसमें कंजर्वेशन और जो उसका जो टोटल एनर्जी है, विच इज कॉल्ड एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो एक्चुअली एक डिफरेंट तरह से डेवलप होती है. उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिएगा, एंड सम डीप प्रॉब्लम यू हैव टू डू. देन उसके बाद आता है लैग्रेंज. लैग्रेंज का मतलब होता है सम ऑफ टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, टी प्लस वी इज एल. और ये बेसिकली एक जनरलाइज पिक्चर है. तो जहां आप वेक्टर से स्केलर डायरेक्शन में जाते हो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स in the Lagrangian form, where we go to actually the generalized motion, we put some constraints, कुछ virtual work हम बात करते हैं, क्योंकि potential energy से connected है work. तो पोटेंशियल एनर्जी को हम एक्चुअली सुप्रेस करने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे आप क्वांटम की तरफ जाओगे. बट लैग्रेंज इज ए प्योर क्लासिकल सिस्टम. ओके. देन लैग्रेंजियन से ही एक वर्चुअल वर्क और डीएलएम्बर्ट से फिर क्वांटम हैमिल्टोनियन पे आ जाएंगे. हैमिल्टोनियन पिक्चर which is sum of kinetic and potential energy. Lagrangian is difference of kinetic and potential energy, k minus
V is actually Lagrangian and K plus V is Hamiltonian. And then we'll come on to the Einstein special relativity, starting it from Michelson-Morley experiment, which you might have gone through a little bit, but I'll go it from zeroth position, and Galilean and Lorentz transformation, and relativity of mass and time. Okay, so with this, and the book actually I'll follow Berkeley physics, some of the finest notes from there, and Klapner, and also classical mechanics by Goldstein for problems. So these parallel books will be there. In Berkeley physics, there are mechanics and relativity portion. Though you have an acceleration other part, but Berkeley physics in mechanics and relativity will be at the central point, and then Klapner and some of the problem and some of the finest point from classical mechanics Goldstein book. So these books are available online. You can get it from our library, from anywhere. हमारे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में भी है, सेंट्रल लाइब्रेरी में है, और आपके एपीडीएफ कॉपी भी है. यू कैन गेट फ्रॉम देयर. सो ये आपकी बुक्स हैं. आपको ये दिखाई पड़ रही हैं किताबें? Yes, sir. The first one is Klapner. It will be mechanics introduction, and then you can have Spiegel है, लेकिन Spiegel मैं problem के लिए follow करूँगा, fundamental के लिए नहीं, and then Goldstein book. And then actually the जो modern physics वाला part है वो इसमें है नहीं, हालांकि relativity है Beiser book में. तो Beiser book का जो relativity है वो मैं ditto follow नहीं करूँगा. I'll follow relativity from mechanics book of Berkeley physics. So that is much better वर्जन. और दोनों में जहां जहां पॉजिटिविटी होगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा. So you should be very alert in each and every lectures, which will be actually you can say take a different turn when you go in mechanics. Okay, so let us start with the mechanics and how this subject evolves. Actually, the evolution of this subject is very important to understand by each and every graduate, because the mechanics started from as early as कब से start हुआ mechanics subject बताइए. Who was the person who is thinks to be responsible to initiate the mechanics as an originator? Newton. Isaac Newton. No, Newton से पहले चार लोग हुए. गैलीलियो. और Newton, हाँ? Galilei, he was the first experimentalist, experimental input to mechanics. और बताइए कितने जानते हैं आप? BC में जाना पड़ेगा आपको. Mechanics is a very old subject, but its formulations was there, and many of the formulation was there, but they have been put in a order after Newton, though they were there. Yeah, yeah. Egyptian कौन था भाई? You know Aristotle. Yes, sir. So the mechanics is a very old subject. So I think if you feel it that you should know the evolution of the subject quickly, this is also given on the Google class. मैंने आपको भेजा भी और भेज दूंगा PDF. So ये मैं आपसे share करना चाहूँगा. And how the subject come at mechanics and Lagrangian and Hamiltonian level, right from the old 320 BC. Okay, there is a very interesting features of this subject. And without mechanics actually, nowadays how you define mechanics? आपने अभी बहुत पढ़ा होगा भाई, कोटा से पढ़ के आए हैं. तो मैकेनिक्स आपको किसने पढ़ा? 10+2 में पढ़े होगे. कौन सी बुक से पढ़े हो मैकेनिक्स तुम सारे? C. Verma. H.C. Verma. H.C. Verma is the Snake Holiday. Okay, and then और कौन सा किताब पढ़ा आपने? Singage. Yes, and usual आपने CBSE और ये NCERT के यूजुअल वर्जन पढ़े होंगे. ओके, सो अब आप देखोगे कि वो जो फिजिक्स है उसमें एक्चुअली द फोर्स इज इम्पोर्टेंट. एंड फोर्स को अगर समझना है तो आपके पास मोमेंटम होना चाहिए. एक्चुअली मोमेंटम समझना है तो मास तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटीज एक्चुअली, एंड वेलोसिटीज समझनी है तो आपको बेसिकली कोऑर्डिनेट हाउ पोजीशन चेंजेस विद टाइम, ये सब चीजें डीपली समझनी पड़ेंगी. और आप समझे हुए हैं बट उनको एक अलाइन करना है. ओ हाउ सब्जेक्ट इवॉल्व. सो देखिए, आप स्टार्ट करते हो पोजीशन से, फिर टाइम, फिर एंड ऑफ द डे पोजीशन एंड टाइम को भी वेलोसिटी डिपेंडेंट मान लेते हो. दैट वाज गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन.
a correction in the Newtonian theory. So, and now people are saying the mass is also actually does not have any, you can say, rest value. It always has mass in the motion. Because ये जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, वो किस स्पीड से रोटेट कर रही है अराउंड द एक्सिस. What is the rotational speed of the earth per second? 11,000 Per second. पर सेकंड पूछ रहा हूं मैं. पर सेकंड कितना रोटेट करती है? कितने किलोमीटर रफली इन ए सेकंड? इन ए सेकंड 11,000 किलोमीटर. बताइए. अर्थ अपनी एक्सिस पे बहुत तेजी से रोटेट कर रही है. आप जो बैठे हो, 30 आप रेस्ट किलोमीटर. पे नहीं हो. या 30 किलोमीटर पर सेकंड. चिराग, वेरी गुड. So your Earth is rotating just like a ball about its axis, which is banded from the north and south pole 22.5 degree, 22.5 degree से banded है, and it is rotating around the sun. तो आप कहते हो ना सनराइज हो गया. सन हमेशा राइज रहता है बच्चों. ये अर्थ जो घूम रही है अराउंड द सन, डे नाइट उससे होता है. सो एंड इट इज मूविंग वेरी फास्ट. 30 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब ये हुआ कि यहां से ऋषिकेश पहुंच गए आप रुड़की से इन ए सेकेंड. इस तरह से रोटेट कर रही है अगर इसका लीनियर कंपोनेंट देखा जाए. सो इस पे आप लोग रेस्ट पे हो क्या कभी? हाउ यू कैन बी? कोई भी रोटेटिंग चीज है तो या यू आर रिलेटिवली एट रेस्ट. आपको बाहर की चीजें भी घूम रही है. वी आर नॉट एट रेस्ट. सो दिस इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज एक्सपेरिमेंटली. बट हमने ऐसा मान लिया है क्योंकि आवर सिस्टम और जो जिस फ्रेमवर्क में हम है वहां पे इस तरह की चीजें ही नहीं है. आप IIT रुड़की कैंपस में घूम रहे हैं भाई, ठीक है. आपकी चीजें रिलेटिवली फिक्स लग रही है आपको. सो ये दिस इज एक्चुअली आवर ऑब्जर्वेशन एंड आवर परसिशन टू ऑब्जर्व थिंग्स. एक दूसरा बंदा इसी को अलग तरह से ऑब्जर्व कर सकता है विद डिफरेंट परसिशन. समझ में बात आई? तो मेजरमेंट और उन मेजरमेंट को अंडरस्टैंड करना, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर पेनिट्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग. इस बात को मानोगे? इवन न्यूटन्स लॉ भी कई तरह से एक्सप्लेन होते हैं. और साइंटिस्ट और जो फिजिसिस्ट है, जो यूजुअल क्लासिकल मैकेनिक्स जो डीपली लोग इन्वॉल्व है, दे एक्सप्लेन दैम डिफरेंटली. आपने बड़ी पढ़ी है डिफरेंट बुक्स, आपने न्यूटन्स लॉ में डिफरेंस देखा है डेफिनेशन में. ओके, थियोरेटिकली वो एक काम करेंगे, कैलकुलेशन से एक तरह से करेंगे, अंडरस्टैंडिंग अलग है. भाई फोर्स तो एफ ही लिखोगे, एफ इक्वल टू एम में, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग होगी ना. वो तो न्यूटन ने भी लिखा, आइंस्टाइन ने भी लिखा, बट दोनों ने अलग अलग डेवलपमेंट करे. अंडरस्टैंडिंग दोनों की अलग थी. न्यूटन्स लॉ एक अप्रोक्सीमेशन था उनके लिए. Alright? So what I'm saying बच्चों, you got another opportunity. उसके बाद जब आप बड़े क्लास में आगे जाओगे, क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ोगे, those who are masters, तो वो मैकेनिक्स में लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन अप्रोच है. And that is actually the one of the first, you can say, material theory also, or environmental theory to understand how things are happening, why they are stable, why things are moving, why they are relative motions, blah blah blah. बहुत सारी चीजें हम बताएंगे आपको. Okay, so let me share you quickly. और कल का मैं लेक्चर लूंगा ताकि ये सब चीजें हम आगे तेजी से पढ़ सके. और फर्स्ट यूनिट को मैं 2 लेक्चर में ही कंप्लीट कर दूंगा आपको जब आपकी ऑफलाइन क्लास होगी. तो बिकॉज दैट इज नॉट वेरी बिग फॉर मी एंड फॉर यू आल्सो. तो प्रॉब्लम हम उसमें ज्यादा करने की कोशिश करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट. ऑलराइट, सो हियर इट इज. I will just share with you the evolution of mechanics quickly. So you are totally 60%. So is it visible to you, bachcho? Students, Yes, is it sir. visible? Yes, sir. So let me give you ये आपको मैं PDF कन्वर्ट करके भेज दूंगा. आप इसको सिक्वेंसली जो पॉइंट आपको नोट करने हैं चाहे तो ठीक है. So here I am doing a review of how as a subject. Is you see these pictures. These are some moderated picture in every walk of life. There is more than this, but if you see the motion
dynamics and statics of these quantities or these pictures, what is the central quantity which basically keep these things like this? Uganda left the meeting, तो आपको मैं absent दूंगा. So actually, the behind of this thing is actually kind of force which you balance. Now, 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 what is the basics that basically control these things? So if you look at, you started with the Aristotle. Is it visible and audible? Yes, sir, it is. Yes, sir. If you look at, it is BC, 384, 322 BC, Aristotle. This guy is Aristotle. He's a great thinker. Okay. So they started mechanics by that there is a force, there will be motion. Or where there is a motion, they think it reversely as Newton later. When there is a motion, actually Aristotle predicted there is some kind of force. So the law he is given F equal to mv, mass into velocity, or F equal to W into V. So the falling time is inversely proportional to weight. This was his observation. He is sure a fulcrum and a beam and like this. Second, this is lever law. So if there is a gain in the force, there is certainly a loss in the velocity. These were the BC, 384 BC observations by Aristotle. So it means the origin of the principle of velocity, actually, he put it as a virtual velocity. The velocity is not origin, actually. It is renormalized by force, by weight, and many other things. Okay? So there is a natural place which is actually uh, responsible to move body, or it may put some obstacle also to encounter. And ये जो force है ये अर्थ के center की तरफ आपकी aligned है. Okay? So a natural motion और एक violent motion भी हो सकती है depending on situation you are dealing with. और अगर कोई बॉडी अर्थ के क्लोजर आ रही है तो उसमें हैवीनेस बढ़ेगी. तो ये एक एक्सेलेरेशन का एक चांस था. ये अरिस्टोटल के वो है discussions and point out. Okay, then he reconciled, or he basically make some prospects of कि जो heavenly body होती हैं, बहुत heavy body, they don't follow the same rules as celestial body. तो उन्होंने बोला स्पिरिचुअली इसको कहा, बट दोनों के रूल्स अलग अलग हैं, वाकई अलग थे लेटर ऑन. प्रोजेक्टाइल मोशन, जो मोशन इन ए प्लेन होगी, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो फर्स्ट प्लेनर मोशन मानते हो आप, और उसका जो पाथ है पैराबोलिक का, एक उसमें दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल. एक कंपोनेंट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड अदर कंपोनेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी और मोशन, और उसका परपेंडिकुलर होगा. तो जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है वो स्पेशल मोशन, एंड इसमें इंपल्स कंजर्व करेगा. अब इंपल्स वो जानता था, एरिस्टोटल वाज अवेयर विद द इंपल्स. कौन होता है क्विकली? Force that Engine is momentum. created in a very short time. Engine momentum. The force in the direction of change, the force in the direction of impulse क्या होता है? Impulse की डायरेक्शन भी होती है कोई? चेंज होता है ना. Yes. So ये जो impulse है, न्यूटन ने इसको ही फॉलो करना है, जो change the momentum is force. So force is directly proportional to change in the moment. तो जो यहाँ पे impulse की बात करता है कि impulse कंजर्व करता है आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में. एक बार आपने इफेक्ट दिया तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है, एंड देन इट विल गो टू द ऑप्टिमम वैल्यू, न्यूट्रलाइज देयर वन ऑफ द कंपोनेंट, एंड देन गो टू द फाइनल पोजीशन. सो इट्स अ प्लेनर मोशन, मोशन इन टू डायमेंशन. ओके, सो क्लासिकल मैकेनिक्स मोस्टली डील विद द प्लेनर मोशन, टू डायमेंशनल मोशन. आपने वन डायमेंशनल मोशन देखी है क्लासिकल मैकेनिक्स की? एक सिंगल पार्टिकल मूविंग इन ए लाइन, दैट यू से द इक्वेशन ऑफ मोशन, और आपके जो मतलब गति की इक्वेशंस है जिनको आप बोलते हो, न्यूटन्स लॉ है, जब तक वेक्टर नहीं आपने लिया एक तरह से.
तो 3 component नहीं आए, हर्षवर्धन left. Okay, so those are the things which you should understand again very clearly and very deeply. एकदम problem attack पे नहीं करना है. You have to understand this subject as a graduate student, B.Tech in engineering physics. You are going to be graduate now. Okay, so ये देखिए, ये Aristotelian idea है. BC, it is 380 to 322 BC, close to that time. Okay, अब फिर तुम आ रहे हो. So now the motion actually उन्होंने कहा कि हम जो मोशन है उसके जो कंपोजिशन है एक पैरेललोग्राम की तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि लेटर पाया गया कि यू कैन डिस्क्राइब कंपोनेंट एज ए कंपोनेंट दूसरा नहीं सकते हो. इन्होंने वैक्यूम की बात नहीं करी, देयर इज नो वैक्यूम. ओके, और बेसिकली कॉलिजन्स और रेस्ट और मोशन है, ये वैक्यूम उनके लिए जरूरी नहीं है. ओके, सो ये उनका हाई स्कूल लेवल पे थॉट्स था अराउंड 200 ईयर बैक, एंड इसको बोलते हैं एरिस्टोटेलियन. एंड दिस इज द एक्चुअली द मैन हु वाज जनरेटेड ए स्कूल ऑफ मैकेनिक्स. ओके, तो एरिस्टोटेलियन ने बिल्कुल मैकेनिक्स को समझा. इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किए, ही जस्ट ऑब्जर्व थिंग्स एंड पुट देम इन सम you can say common observations which you repeatedly find in nature. Okay, so now you have, next is Archimedes. You understand Archimedes? Archimedes आपने पढ़ा है कहीं फिजिक्स में? कौन से एरिया में आपने पढ़ा है Yes, Archimedes? sir. हैं? Buoyancy. Fluids, Right. Archimedes principle. Archimedes principle. It's a buoyancy. Okay, and fluid also follow mechanics of fluids, dynamics of fluids. So it is actually Archimedes era. 322 से नीचे जाओगे up to 212 before Christ. So इन्होंने बताया कि जो आपका वेट है at a distance L, अगर फल्क्रम का कॉन्सेप्ट है तो PL होगा. और he has also given the concept of gravity. How to define gravity? Property of the earth to attract everything towards its Center. सेंटर. अर्थ ही नहीं है, जितने भी हेवनली बॉडी है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, वो सारे ग्रेविटी का एस्पेक्ट फॉलो करते हैं. ओके, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनको किसी भी बॉडी का उसको अंडरस्टैंड करना, उसको कैलकुलेट करना, ये सब आर्किमिडीज ने डेवलप कर दिए थे. ओके, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम. अगर आपके पास ट्राइंगल है, ट्रेपेजाइडल सिस्टम है, आपकी टेट्रागोनल स्टेट्स है, जब से केमिस्ट्री में पढ़ते हो, पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम से आप जो है आप कंपोनेंट फोर्स के पैरेललोग्राम से ही समझो उनके बीच का एंगल, हाउ फोर्स इज एक्चुअली कंट्रोलिंग डिफरेंट डायरेक्शन. वेक्टर जो एनालिसिस है किसी भी 2 डायमेंशनल वेक्टर का, और 3 डायमेंशन में वो बन जाता है क्यूबिक or trapezoidal, depending on the location of the forces you put in and the kind of body you have. Okay, so it is actually one more feature here. There is a parabolic, the center of gravity of a parabolic system. This was a very amazing aspect that Archimedes added. You take a parabola, it means even there is not a closed structure like this, uski center of gravity nahi hai, or closed structure like this, और क्लोज स्ट्रक्चर लाइक दिस बॉक्स, इनकी सेंटर ग्रेविटी निकाली जा सकती है. उन्होंने बोला बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. इफ यू थिंक इट, द पैराबोला और a part of parabola can also have center of gravity. It means if there is a curvature in a path, you can find the all mechanics in terms of a fixed point, which will be the center of gravity of this curved path. So कोई जरूरी नहीं है पाथ क्लोज हो. ये ऑब्जर्वेशन आर्किमिडीज की थी. ओपन पाथ है बट कर्वेचर है उसमें, और उससे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाली जा सकती है, क्योंकि तब तक इंटीग्रल तो आया नहीं था. आपका चलन कलन इंटीग्रल डिफरेंशिएशन का डेवलपमेंट उतना फास्ट नहीं था. बट ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये इन्होंने फर्स्ट टाइम थ्रो की, और एक ये माइलस्टोन बना, ये पॉइंट एक माइलस्टोन बना फॉर द मैथमेटिक्स, एक्चुअली मैथमेटिशियन. जैसे आप न्यूटन है, न्यूटन फिजिसिस्ट था, मैथमेटिशियन था. कौन बताएगा?
ट्रिनिटी कॉलेज लंदन में पढ़ा था. Sir, he was both. Mathematics. Both. He was professor of mathematics and the president of the Royal Society London. So he was mathematician. न्यूटन ने बहुत काम किया मैथमेटिक्स पे और फिजिक्स भी मैथमेटिक्स से डेवलप की. ओके, सो इफ यू लुक एट the mechanics and mathematics, many mathematical branches are connected together. You not separate out. And at high level, physics come from mathematics, mathematical equation. You cannot generate ideal laws all the time. Okay, so it is there, and these are the kind of paper, if you look at which are based on the center of gravity and its characterization for parabola. Even now 2015 में लोग बाग रिसर्च कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, जो कि उन्होंने बहुत पहले बताया कि आपका पैराबोलिक सेगमेंट है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा और उससे हम फिजिक्स उसकी समझ सकते हैं. ओके, और फ्लोटिंग बॉडी के आपको पता ही है कि बॉडी का आप डिस्प्लेस करते हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा. Then there is come a resonance, an answer actually, and then start Kepler, real system. Now Aristotle के बाद Kepler, आपने Kepler के लॉ पढ़े हैं? So they are also mechanics actually. They are also mechanics. If you have center force, so Kepler ने empirical law develop की कि orbit जो है planet का वो sun इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, अंडे ब्रह्मांड बोलते हैं, जैसा एटम है वैसा ही पूरा ब्रह्मांड, उसी तरह की स्ट्रक्चर्स है. तो माइक्रो स्केल पे और नैनो स्केल पे और मैक्रो स्केल पे चीजें कनेक्ट की जा सकती है, रीनोवलाइज चीजें. तो इन्होंने पहली बार बोला कि इलेप्टिकल ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है. देन वी हैज लेफ्ट द मीटिंग. ऐसी कौन सी बात होगी भाई, अभी तो टाइम है. एंड ये जो प्लेनेटरी मोशन है ये इलेप्टिकल है, सन इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल में उसके इक्वल एरिया स्वीप है. और इन्होंने टाइम और जो रेडियस है उसमें रिलेशन दिया, टी स्क्वायर एज एक्चुअली ए टू द पावर 3. लाइक ओके, सो द फर्स्ट लॉ निकल के आया बेसिकली इन 1580, ओके, रिगार्डिंग दिस. So the orbit must be elliptical. अभी ये चीज बिल्कुल 100% प्रूफ है. Even for the electron in the s orbit भी 100% spherical नहीं है, circular नहीं है. और electrons has always elliptical orbit और उनमें relativity फिर आपके लगाई गई है later on. So ये सारा जो पूरा माजरा है ये forces हैं, उन फोर्स को डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको समझना है, उनके एक्शन समझना है, उनकी लोकेशन समझना है, एंड हाउ वन फोर्स connected to other one through some you can say space and time coordinate or some density coordinate. Okay, so this is actually the first time the theory start with the close to the Newtonian mechanics, because now the calculus, integral and differential calculus was come into the picture. So now you become more theoretical and न्यूटन का एस्ट्रोनॉमी में बहुत बड़ा यूज है. बताओ न्यूटन का एस्ट्रोनॉमी में क्या यूज है? बहुत उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज दी और एक्सपेरिमेंटल चीज दी एस्ट्रोफिजिसिस्ट को. बोलो. गिवन इट टेलीस्कोप कि अभी भी आप यूज करते हैं. यस, 23 इंच टेलीस्कोप दिया जो कि 24-25 मीटर का था. तो ऑप्टिक्स को भी यूज किया और तो मैथमेटिशियन थे. So what I'm saying is you should change your now mind setup. You are at a better place. So you should think about the physics not as a physicist but as a graduate student, a technology student who can apply it to different branch. आज फिजिक्स हर ब्रांच में, अगर फिजिक्स है तो टेक्नोलॉजी है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स चाहिए, केमिस्ट्री ओके, केमिकल इंजीनियरिंग में चाहिए, बट वहां पे भी तो आपको एटम मॉलिक्यूल तो चाहिए, क्वांटम केमिस्ट्री. फिर आप उसके केमिस्ट्री रिएक्शन भी नहीं होगी, बॉन्डिंग होगी, या आपका बॉन्ड बनेगा, या फिर आपका आयनाइजेशन होगा. ये तो क्वांटम मैकेनिक्स डिसाइड करती है, आयनाइजेशन एनर्जी. ओके, सो ये सब चीजें देखिएगा. एंड देन द रियल क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट, एंड दिस स्टार्ट फ्रॉम 1564. Who is this guy? Galileo. And he was the person actually who introduced Lagrange. And Lagrange is actually entirely modern mechanics part, Lagrangian and Hamiltonian. So Galileo was considered to be one of the founding stone for mechanics, though the idea are spreaded through Aristotle. The first
you can say the philosopher that I just, उन्होंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करके एज ए लॉ लिख दिया, लेकिन उसको एज ए सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया वो गैलीलियो माना जाता है. ओके. और एट द एज ऑफ 25 वो मैथमेटिक्स के चेयर थे यूनिवर्सिटी ऑफ पीजा, इटली. Okay, and they called as the first experimentalist on that. And he has tried to understand the mechanics of lever, lathe, flywheel, crane, wrench, pulley, and the concept of moment. What is moment or moment of force? क्या होता है force का moment? What is moment of force? Torque. 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 किसने बोला? Yeah. Yeah, and it generated a rotation, tendency to rotate. So angular momentum come into the picture. So rate of change of angular momentum is torque. The moment of force is torque. So you understand rate of change of angular momentum as a moment of force changing with time. So this subject is very clear by now, and people are takingly just okay the moment of force and Newton's law, वहां से आप आगे बढ़ गए. आपको समझना चाहिए कि ये जो हम लॉ यूज कर रहे हैं इसकी फाउंडेशन बहुत पहले थी, और वो किस फॉर्म में थी, बिकॉज आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ओके आपने यूज किया न्यूटन लॉ, बट ओके जेई एडवांस क्वालिफाई करके आए हुए हैं तो यू आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर मैकेनिक्स, आई कैन अंडरस्टैंड. ओके. So Aristotelian philosophy basically start thinking that direction of force, and he say virtual velocities or virtual work. Actually the displacement is tending to zero. तो डिस्प्लेसमेंट टेंडिंग टू जीरो, तो वर्क जीरो हो गया. तो मतलब बहुत कम डिस्टेंसेस के लिए उन्होंने फोर्स को अप्लाई करना शुरू किया और उससे वर्क कैलकुलेट करने की कोशिश किया. और इन्होंने कहा कि जो डिस्टेंस है वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो एक तरह का एक पैराबोलिक है. v इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का आइडिया उनको नहीं था. और अगर छोटा सा चेंज करोगे वेलोसिटी में तो एक कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन डेवलप कर सकते हो. तो काइनेटिक्स वाज डेवलप्ड बाय गैलीलियो गैलीली. उसके बाद आती है डायनेमिक्स आल्सो and statics also, mechanics part. Okay, so these were the some of the things which you try to understand, that which era has first coined or first put forward which law, and how this law take its position and take its form that is today onward was not actually existing. It was existing in different form and different angles, but it was there right from 322 BC, Aristotelian time, and slowly evolved. Okay. Now, the time measurement was done by Galileo. Galileo had given the principle of inertia, and it was very famous principle that Newton's has treated as its first law. What is this principle? कौन बताएगा? What is principle of inertia? जो लिखा हुआ है ये नहीं है, स्टैंडर्ड जो रिजल्ट आप यूज करो. What is inertia? Inertia principle क्या होता है बच्चों? An object tries to retain its state until an Please external switch on force is your video also when you speak, Ayush. Is there any problem? No, sir. Just a second. Yeah, yeah. Please switch on so that I can Uh, see. Okay, this. Okay, yes, Yes, Ayush. sir. So the principle of inertia is that an object tries to stay in in its state of motion unless and until an external force is applied on it. Yeah. So the statement is that a body cannot change its original state until unless there is some influence of some force, external force. Yes, sir. And how you understand force? The force actually understood in terms of many ways actually. But mechanics जो आपका न्यूटनियन मैकेनिक्स है उसने बोला कि I'll only understand it's in a very fundamental way, that is momentum, change of the linear momentum. अगर बॉडी लीनियर मोशन में है, अगर रोटेशन में है, चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम. एक तरफ आएगा फोर्स और एंगुलर, एक तरफ एंगुलर मोमेंटम का टाइम एवरेज आएगा टॉर्क. तो दोनों की टेंडेंसी अलग है. एक टेंडेंसी है ट्रांसलेशन, दूसरी टेंडेंसी है रोटेट, टेंड टू रोटेट द बॉडी. ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए. एंड आई थिंक so
जो गैलीलियो ने जो आपका मैक्सिमम था, उन्होंने जो फोकस किया वो किया प्रोजेक्टाइल मोशन पे। और प्रोजेक्टाइल मोशन में उन्होंने कहा कि ये प्लेनर मोशन है, इसमें टू एक्टर्स इन्वॉल्व है। सो दैट्स व्हाई गैलीलियो वाज इंटरेस्टेड टू हैव हाउ द मोर देन वन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विल बी यूटिलाइज्ड इन ए मोशन। सो आप कहोगे मोशन इन टू डायमेंशन, तो फर्स्ट जो मोशन हाई स्कूल से आप पढ़ते हो, कौन सी मोशन आपको बताएगी इन टू डायमेंशन? ए पेंडुलम मोशन इज इन टू डायमेंशन। सिंपल पेंडुलम आप लेबोरेटरी में करते हो, ये टू डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशन है? two dimension. बोलिए बच्चों। तो टू डायमेंशन पाथ कैसा होता है पेंडुलम का? An arc. इज इट पेंडुलम का जो पाथ है, आपने ट्रेस करके देखा कभी? ये पेंडुलम पाथ किस तरह का होता है? लीनियर और समथिंग एल्स? Curve रहता है sir. it, मतलब arc it has होता some है. it has some curvature, it's parabolic actually, अगर सिमेट्रिकल है दोनों तरफ। एटमॉस्फेयर पैराबोलिक होता है ना पाथ? पैराबोलिक कैसे होगा? पैराबोलिक कैसे होगा कि आप पेंडुलम छोड़ दो, इफ एटमॉस्फेयर बोथ दिस डायरेक्शन इज सेम, सो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी? एट दी ओरिजिन। वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी एट दी ओरिजिन, एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एट द एक्सट्रीम। तो अगर आप ये जो पाथ है जो कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशंस को दिखाएगा, तो कैसा आता है? न्यूटन जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वही देख लो आप। Yes, फोर्स sir, parabolic. पैराबोलिक है, उसका जो पाथ प्लॉट करोगे तो पैराबोलिक पाथ इज ऑसिलेशन एक्चुअली। तो जहां भी आपको पैराबोलिसिटी दिखी, इसका मतलब है कि इट्स पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्सिलेशन, वाइब्रेशंस है वहां पे। जैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी है सॉलिड की, वो भी पैराबोलिक होती है, आपके ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा के टर्म में प्लॉट करो तो पैराबोलिक है। So there are many things in the life which are not linear. They have some curvature, and that curvature is important. From curvature to linearity is important. Because that give you different kind of physics and understanding in the background. तो दोनों एक नहीं, linearity और curvature का origin और उसके understanding बहुत deep है बच्चों। और जो materials है, जब material में हम linear variation, parabolic variations पढ़ते हैं, तो आप one dimension से two dimension की तरफ जाते हैं। The physics in 1 and 2 and 3 मैथमेटिकली आपको फैक्टर नजर आएगा 2 and 3 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में, लेकिन जो आपके रीनॉर्मलाइजेशन है वो बहुत डिफिकल्ट है। उनको समझना, विजुलाइज करना डिफिकल्ट। मैथमेटिकली कर लोगे वो तो कुछ भी नहीं है मैथमेटिकली, बट विजुलाइज करना और उनको प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। सो इट इज देयर। सो अभी देखिए गैलीलियो से स्टार्ट हुआ, देन क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्टेड विद होम। आपने हाइगेंस पढ़ा होगा, हाइगेंस प्रिंसिपल आपने कहाँ पढ़े हैं? Sir, उसमें wave optics में. वेव। तो अभी मैंने बताया कि पैराबोलिसिटी वेव को जन्म देती है। तो इन्होंने देखो, हाइगेंस has said okay, it is very interesting characteristic, a colloidal pendulum, ओके, और टाइम पीरियड निकाला √4r/g, तो कांस्टेंट पीरियड ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये जो चीजें हैं ये देखिए, so these are not repetition, these are something which basically click your mind, oh आपने रट लिया है ये चीजें, मैथमेटिक्स है इक्वल टू एमएस कर रहे हो इंटीग्रल, बट इनको आपको रटने की जरूरत नहीं है। दे आर कमिंग अप नेचुरली थ्रू सम historical fundamental principle evolving slowly. Okay, so he said, okay, the principle of inertia, any body in motion tend to move in a straight line. हाइगेंस ने इनर्शिया का प्रिंसिपल कैसे समझाया? आपने कहा कि ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया ने कहा नहीं, let me explain it like this. Any body in motion tend to move in a straight line with the same velocity as long as it does not meet an obstacle. So बात वो क्या रहा है, ये बात उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक मतलब इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक और एक पेंडुलम के टर्म में बात कर रहा है। लॉ वही है, बट वेलोसिटी क्या रहा है इसकी? वेलोसिटी पैराबोलिक वेरिएशन, v स्क्वायर वेरिएशन। ओके, सो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज अगर आपको पता है तो उससे आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि बॉडी फॉल कर रही है बिटवीन 0 एंड 0। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आइडिया दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाइजीन्स ने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू मेक ए ऑर्बिट स्टेबल आपको सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दोनों फोर्स चाहिए।
तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर बाई आर होती है ना। आपने कैलकुलेट किया होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, प्लेनेटरी मोशन में जब ऑर्बिट निकालते हो तो बैलेंस करते हो ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, करते हो ना, या किया होगा? Yes, sir. Yes. सो क्यों किया? वो फोर्स किसने बताया? फोर्स बताया हाइगेंस ने, और उसके पीछे लॉ ऑफ इनर्शिया है और पैराबोलिसिटी है, पैराबोलिसिटी ऑफ द पाथ। ओके, सो मैं आपको छोड़ ही दूंगा 5 मिनट में, साथ या भागो मत। ये भागना मुझे बहुत गंदा लग जाता, आओ मत, आओ तो पूरा बैठो, नहीं तो मत आइए। आपको मैं 2-3 अटेंडेंस मायने रखूंगा, लेकिन उससे ज्यादा हो गए फिर देन आई पुट यू इन केज। ऑलराइट, सो this is F is V square by R, which basically you can convert into work done. Okay, so these are the path you can understand them. मैं इनमें डीपली समझाने के लिए तुम्हें भेज दूंगा ये। And then comes Newton, giant, and he basically originate। अब मैंने मैकेनिक्स की बजाय क्या बोला, ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्लासिकल मैकेनिक्स। समझ में आया बच्चों? He just started classical mechanics 1642 to 1727, and he is responsible for the dynamics of the mechanics has two part। कितने पार्ट होते हैं मैकेनिक्स के? आपने 10+2 में पढ़े होंगे। कौन कौन से पोर्शन पढ़े आपने? हाउ मेनी पोर्शंस यू हैव स्टडीड? Sir, relativistic and non-relativistic type. That is that is actually still mechanics, but you have two components. One is statics, other is dynamics. Yes. Both. Okay, so the principle of dynamics was given by Newton, and his idea was basically published। आप देखोगे नेचुरल प्रिंसिपल मैथमेटिका 1687। He was the professor of mathematics at Trinity College, Cambridge, और he was also president of Royal Society London Physics Association के। He was the first professor and first president of that Royal Society of London। Okay, so central force का आइडिया दिया, फिर 3 लॉ उन्होंने लिखे। फर्स्ट लॉ, that every body preserves state, that is the law of inertia। गैलीलियो गैलीली के लॉ को थोड़ा सा और इम्प्रेसिफाई किया। सेकंड लॉ आप ध्यान से पढ़िए, the motion is ever proportional to the motive force, and it is in the direction of the right line in which the force is impressed। Every action there is always opposed and equal reaction। So अब आपकी जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फिर फोर्स का जो है मोटिव फोर्स, यानी कि आपका चेंज इन द मोमेंटम जो है आपका आइडिया आया, वो आइडिया डायनेमिक्स दैट वाज गिवन बाय न्यूटन फर्स्ट टाइम। सो डायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एक्सेलरेटिंग और रिटार्डिंग फोर्सेस एंड वेराइंग मोशन which they most of the time produce। ओके, तो जो पैरेललोग्राम है वो इसका वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल है। सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ये सब इसी में आता है। सर्कुलर ऑर्बिट, ग्रेविटी, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, दे आर द पार्ट ऑफ इट। एंड ऑर्बिट सर्कुलर ना होके इलेप्टिकल है, वो भी इन्हीं लॉ से आता है, हाइगेंस का सेंट्रीफ्यूगल लॉ। सो ये सारे जो कैपलर्स, हाइगेंस, आपका एरिस्टोटल, ये सब मिल, गैलीलियो गैलीली, न्यूटन्स ने उसको में के जो पार्ट थे वो उसके उसमें से पिक किए और उनको डेवलप किया मैथमेटिकली। ओके, एंड देन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल की बात कही उन्होंने। ओके, एंड देन ये एक्चुअली मतलब मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, आपका मन हो पढ़ लीजिएगा। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इफ आई हैव सीन the which are the strongest soldier or giants of classical mechanics, you will put it through beyond Newton, Galileo, who was responsible for principle of inertia, Huygens, who has given the concept of mass and centrifugal force, जो कि हमने प्लेटरी बॉडी में डायरेक्टली यूज कर लिया, and Kepler's law and inverse square law। Most of the forces are inverse square law, which are central forces generated due to gravity or mass of the you can say heavenly bodies। So ये जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। Then come the 3 more giants,
इनको बोलते हैं एनालिटिकल मैकेनिक्स। लेबनिज, हाइलर एंड मैपर्टाइज, ये तीनों जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के जन्मदाता है। इन्होंने कैलकुलस दिया आयलर ने। लेबनिज थ्योरम आप जानते हो, लेबनिज प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, लेबनिज बहुत बार यूज Yes, करते हो sir. मैथमेटिक्स में, हैं? Yes. तो इन्होंने कहा कि चेंज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज वर्क। तो इन्होंने एप्लीकेशंस की तरफ ध्यान दिया। इनको एनालिटिकल मैकेनिक्स के फादर बोला जाता है कि भाई हम कैसे वर्क, ठीक है, चेंज काइनेटिक एनर्जी को वर्क हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को दबाने की कोशिश की गई क्लासिकल मैकेनिक्स में। ओके, सो एम कैन नॉट बी डेल्टा वी, एम मस्ट बी डेल्टा वी स्क्वायर। उन्होंने कहा कि अगर वेलोसिटी चेंज करोगे तो जो आपका चेंज इन वर्क आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी नहीं आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी स्क्वायर। ये आइडिया लेबनिज ने दिया, तो उससे आपका एप्लीकेशन एकदम निकल के आया, वर्क एनर्जी थ्योरम। आयलर ने कैलकुलस डेवलप किया। जो आयलर थ्योरम है, जो आपका कैलकुलस है, जिसको आप चलन कलन बोलते हो। कौन सी बुक पढ़ी आपने कैलकुलस की? Which book you know? One of the standard book of differentiation and calculus, boundary conditions, etc., etc. Singes. Engage. आपने सिंगेज पढ़ रखा है, लेकिन जो फाइनेस्ट किताब है, जो कैलकुलस, कहाँ से आई? आयलर, लेबनिज, इनकी बुक पढ़ी आपने? आयलर की कोई किताब पढ़ी? या फिर एक ऐसा इंडियन ऑथर जो कि मतलब कैलकुलस के लिए बहुत फेमस हो? आपने गोरख प्रसाद की किताब पढ़ी? इससे नाम सुनो पढ़ी, मेरा फ्रेंड He was, थोड़ा देखना चाहिए था। तो he is very finest। और वो डिग्री कॉलेज में ही थे, but he was associate professor like S.C. Verma entered into IIT later stage, but he was finest। आपको कैलकुलस समझनी है तो गोरख प्रसाद द फाइनेस्ट, उनकी किताबें हैं। ओके, सो मैकेनिक्स को आप देखिए, आयरलैंड ने कहा कि अगर मैकेनिक्स है मेरे पास तो मैं एफडीटी निकाल सकता हूँ। तो उन्होंने प्रिंसिपल दिया कि एफडीटी एमडीवी के बराबर होना चाहिए। ओके, सो मैकेनिक्स में इन्होंने बोला कि अगर एफडीटी एमडीवी है तो ये नेसेसरली ट्रुथ है। तो इसका मतलब है एमडीवी जो है एफ स्क्वायर डीटी या एफ क्यूब डीटी, ये कैन नॉट हैपन, एफ स्क्वायर डीटी होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ द फोर्स। तो फोर्स और आपका जो वेलोसिटी चेंज है वो बिल्कुल लीनियर कभी भी नहीं होगा। आप कहें कि वेलोसिटी चेंज करो तो मेरी फोर्स, या फोर्स चेंज करो तो मैं वेलोसिटी, वो लीनियर कभी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आपका फर्स्ट ब्रेक, सेकंड, आपका आप लगाते हो क्लच गाड़ी में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो वो तो बिल्कुल अलग स्पीड देता है आपको, क्योंकि फोर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो ये सब चीजें मतलब आपको पता होनी चाहिए। होप इट विल हेल्पफुल। और मार्पडीज ने देखो ये लगाया है, जो आपका ये मिनिमम है, और अगर मैं लैग्रेंजियन और आरएल को यूज कर दूं तो उन्होंने कहा था कि चेंज इन एमवीडीएस विल बी जीरो, इस पूरे इंटीग्रल का स्मॉल चेंज। और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट किया गया, ये डिलेम्बर्ट प्रिंसिपल से आया है। चेंज इन दी टी जीरो टू टी एफ, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। हेलो होटा जी। मैं ठीक हूँ, बोलो होटा जी। मैं 5 मिनट बात करूं तुमसे? अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, बस 5 मिनट में बात करता हूँ। सो आपने डिलेम्बर्ट प्रिंसिपल, लैग्रेंज है, पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स आप यही पढ़ोगे। डिलेम्बर्ट ने एनालिटिकल मैकेनिक्स को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि आपका जो न्यूटन लॉ है उसको हम स्केलर कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमें फोर्स फोर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हम वर्क वर्क कैलकुलेट करेंगे डिलेम्बर्ट प्रिंसिपल की तरह। ओके, एंड लैग्रेंजियन ने कहा कि ओके, अगर मुझे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी था उसका डिफरेंस चाहिए मुझे, और उसका डिफरेंस मैं एक तरह से डायनेमिक्स को प्रोड्यूस कर सकता हूं विदाउट यूजिंग एनी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट यूज किए उन्होंने, तो स्केलर्स को दबा दिया गया। तो उन्होंने क्या किया, जो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है उसको उखाड़ने की बजाय उसको दबा दिया गया। पोटेंशियल एनर्जी को क्लासिकल मैकेनिक्स में, जब क्वांटम मैकेनिक्स जाओगे तो सारा पोटेंशियल ही दिखेगा आपको, वहां पोटेंशियल एनर्जी को इवॉल्व किया गया, यहाँ दबाया गया सारा काइनेटिक की तरफ, पोटेंशियल एनर्जी को भी उधर ही धकेल दिया। ओके, सो ये इवोल्यूशन है। फिर आइंस्टीन का टाइम है, अर्ली 20th सेंचुरी, जो हम इस टाइम सॉरी, एंड देयर इज अ स्कैंडल नाउ।
So okay, quantum qubits, जो semiconductor physics काम कर रही है वो qubits काम कर रहे हैं. So very new applications are coming up. So it is the time is relative. Time relative है, mass relative है, एनर्जी भी रिलेटिव है. और एनर्जी बेसिकली रेस्ट मास और स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के बराबर है. थोड़ा सा मास चेंज होगा तो बहुत एनर्जी पैदा हो सकती है, आइंस्टीन ने कहा. बट मास इज आल्सो वेलोसिटी. तो डिटरमाइन कैसे करेंगे? इंडिटर्मिनेंसी आ जाएगा अगर फिर क्वांटम पिक्चर में आप जाओ. तो ये पूरा एक इवोल्यूशन है न्यूटोनियन मैकेनिक्स से पहले, न्यूटोनियन के बाद, और किस तरह से सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ. तो अगर मैं टाइम रेंज कहूं, ये नेचुरल साइंस बोला जाएगा. यू स्टार्ट विद हेलेनिक, मतलब सेंट्रल पार्ट, Newtonian, then classical mechanics, and now it is double revolution, classical and quantum, and you are having a lot of applications coming up, changing the world, quantum material, smart material, और क्लासिकल फिजिक्स में आप उस तरह की चेंजों की बात ही नहीं कर रहे हो कुछ भी. समझ में आया? सो ये है. तो इसमें इसका मतलब है हम पहले डायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे, और डायनेमिक्स के दो मेन पार्ट होंगे. एक है वेक्टर न्यूटोनियन मैकेनिक्स, दूसरे एनालिटिकल जो कि वेरिएशनल मैकेनिक्स है, जिसमें हम वेक्टर को दबान खत्म करेंगे. अब स्केलर की बात करेंगे. तो जैसे यहाँ पे फोर्स एंड मोमेंटम है, तो यहाँ क्या है? काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी. इधर टू मच अटेंशन टू कोऑर्डिनेट, यहाँ पे क्रैंक और ट्रैंक सिस्टम है. कोऑर्डिनेट की बजाय आप वेलोसिटी पे बात करेंगे, उसके वेरिएशन पे. फेल एट ए लार्ज एंड स्मॉल स्केल पे फेल हो जाता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स. ये इज कंसिस्टेंट एट स्मॉल एंड लार्ज लेवल. तो इसका मतलब है मैक्रो और माइक्रो वर्ल्ड में एनालिटिकल और वेरिएशनल मैकेनिक्स इज मोर पावरफुल. ओके, सो देयर इज नो इंटरेस्टिंग एक्सटेंशन. आप इसका ज्यादा एक्सटेंशन नहीं कर सकते. और ये जो आपका वेरिएशनल मैकेनिक्स है, इसमें आप एक्सटेंशन कर सकते हो बाय मेकिंग कांस्टेंट ऑफ मोशन, बाय जनरेटिंग कांस्टेंट्स इन द मोशन. वो जनरेट कर सकते हो, कुछ कांस्टेंट्स हैं, उन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो. ओके, एंड यहाँ पे अननोन एडिशनल कांस्टेंट आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, उनको जानते नहीं हो, बट आप कर लोगे कांस्टेंट. बट यहाँ पे दे आर इजी टू डील विद द कांस्टेंट विद सम फिजिकल आइडियाज. सो इट इज द सब्जेक्ट. डॉट कैंसिलेशन में बाद में आप समझ पाए, ठीक है. सो दिस इज द क्लोजिंग ऑफ माय फर्स्ट लेक्चर. टुमारो आई विल स्टार्ट with the mechanics of a single particle in one dimension, all properties. I'll try to finish it in tomorrow lecture. So bye for now. Thank you, sir. I hope you might have warm up and try to take on mechanics problem as a unit, first unit of my course. Hope you like it. So you may leave. Bye Thank you, for sir. now. Thank you, sir. Mhm. Thank you, Thank sir. you for your opinion. Thank you, sir.